Next part is working capital. Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day activities of the business. So working capital is that capital which is required to carry out day-to-day activities of the business. After estimating fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that will be needed to ensure smooth functioning of the business firm. So, whenever you are going to start any business, then first you need to estimate need of fixed capital. That is the number of fixed asset you are going to purchase, and on that basis you need to calculate amount of fixed capital you require to start the business. But not only fixed capital, you also required another type of capital called as a working capital. So working capital is that capital which is required to carry out routine activities of the business, day-to-day activities of the business. So capital needed to carry out day-to-day routine activities of the business called as a working capital, like production activity. So to carry out production, you require purchasing of raw material. So capital required to purchase raw material is a part of working capital. You need to make payment of salaries to employees, that is also part of working capital. You need to make payment for repairs and maintenance, that is also part of working capital. So working capital means that amount which is required to carry out day-to-day or routine activities of the business. म्हणजे आपल्या बिझनेसमध्ये आपल्याला काही रुटीन ऍक्टिव्हिटी कराव्या लागतात, डे टू डे ऍक्टिव्हिटी कराव्या लागतात, काही ऍक्टिव्हिटी ह्या सतत कराव्या लागतात आणि त्या ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी आपल्याला जे कॅपिटल लागतंय, जे पैसा लागतो, त्या पैशाला म्हटलं जातं वर्किंग कॅपिटल. सो फर्स्ट बिझनेसमन नीड टू कॅल्क्युलेट or need to estimate amount of fixed capital, and thereafter he has to estimate amount of working capital. म्हणजे सुरुवातीला बिझनेसमन कोणतं कॅपिटल कॅल्क्युलेट करणार? फिक्स कॅपिटल, आणि त्यानंतर बिझनेसमन वर्किंग कॅपिटल एस्टिमेट करतो. अ बिझनेस फर्म requires fund to store adequate raw material in stock. See, if you want to maintain continuity in production, smooth production, then you need to maintain sufficient amount of stock of raw material, and to purchase that raw material you required money, and that money is called as a working capital. That is also part of a working capital. तो अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चालू रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, स्मूथली प्रोडक्शन चालू रहना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल का सफिशिएंट स्टॉक करके रखना पड़ेगा. और अगर रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है तो हमें क्या लगने वाला है? पैसा लगने वाला है. तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो भी पैसा हमें लगता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वो भी किसका हिस्सा माना जाएगा? वर्किंग कैपिटल का हिस्सा माना जाएगा. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods, and also if you want to maintain continuity in supply of goods to the customer, then you need to maintain sufficient stock of finished goods, and it means you need to carry out production continuously. मतलब आपको प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली कैरी आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए भी क्या लगेगा? पैसा लगेगा, और वो पैसा ही क्या कहा जाएगा? वर्किंग कैपिटल. इन एक्चुअल प्रैक्टिस goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Generally, in business organization, basically manufacturing business organization, they sold goods on credit basis.
and when you sold goods on credit basis, that sales does not get converted into cash immediately, because you sold that goods on credit basis and you will get cash either after 15 days or either after 1 month or maybe after 2 months, depends on credit policy of the business organization. म्हणजे तुम्ही बिझनेस जेव्हा एखादा करता, म्हणजे बेसिकली मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस करता, एखादं प्रोडक्ट तयार करता आणि ते विकता, तेव्हा काय केलं जातं, ते जे प्रोडक्ट आहे जनरली क्रेडिटवर सेल केलं जातं. क्रेडिटवर म्हणजे उधारीवर. म्हणजे आज जर तुम्ही सेल केले तर लगेच त्याचे पैसे तुम्हाला मिळत नाहीत. ते पैसे तुम्हाला 15 दिवसांनी मिळतील किंवा 1 महिन्याने मिळतील किंवा कधी 2 महिन्यांनी देखील मिळू शकतील. म्हणजे क्रेडिटमध्ये जे गुड्स आपण सोल्ड करतो त्याचे पैसे आपल्याला पटकन मिळत नाही. म्हणजे तेवढा वेळ आपल्याला सस्टेन करावं लागतं किंवा तेवढा वेळ आपल्याला मॅनेज करावं लागतं. Firm will have to arrange for fund till the amount is collected from the debtor. The person to whom you sold goods on credit is called as a debtor, and that debtor may make payment either after 15 days, after 1 month or after 2 months. Till that, you have to make arrangement of cash, because you have to pay for salary, you have to pay for repairs and maintenance, you have to pay for purchase of raw material. So, till getting money from debtor, you have to manage cash, and that cash or requirement of cash is also part of working capital. तो हम लोगों ने देखा है, जिस पर्सन को हम क्रेडिट पे या उधार पे गुड्स बेचते हैं उसे हम कहते हैं डेटर. तो अगर आज हम लोगों ने डेटर को गुड्स बेचा तो तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा या 2 महीने के बाद मिलेगा. लेकिन तब तक हमारे पास पैसा होना चाहिए. क्यों पैसा होना चाहिए? क्योंकि वो तो हमें बाद में देगा, लेकिन हमें वर्कर को सैलरी तो देना पड़ेगा. हमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर आता है उसका पैसा तो तुरंत देना पड़ेगा. वर्कर थोड़ी रुकने वाले 2 महीने तक. या अगर कोई रिपेयरिंग का खर्चा आया तो हमें वो तुरंत देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तुरंत देना पड़ेगा. तो इसीलिए जब तक हमारे पास डेटर का पैसा नहीं आएगा तब तक जो भी खर्चे हमें लगेंगे वो खर्चा कंप्लीट करने के लिए, वो खर्चा जो भी खर्चा हमें आएगा उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास पैसा लगेगा. और उस पैसे को भी किसका पार्ट माना जाएगा? वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाएगा. कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स, सिंस uncertainty is always a future of business. Some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. We know that in every business there is a risk and uncertainty. किसी भी बिजनेस अगर आप करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें रिस्क रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा. Any uncertainty can occur at any time in the business, and you should be ready to meet that uncertainty. बिजनेस में किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. आज अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, समझो आपका मशीनरी है खराब हो गया, बिजनेस में कहाँ पे आपका फैक्ट्री है वहां पे आग लग गई, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. Any uncertainty may occur at any time. तो ऐसे अनसर्टेनिटी अगर आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए. अगर आपके पास पैसा है तो अगर अनसर्टेनिटी आती भी है तो आप उस अनसर्टेनिटी को नलीफाई कर सकते हैं, और इसीलिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी. तो इस तरह का जो पैसा आपको लगेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. तो बिजनेस फर्म को कैपिटल कौन कौन से चीजों के लिए लगेगा? फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज. इट मीन्स टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू मेंटेन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. आपको पैसा लगता है रॉ मटेरियल का स्टॉक करने के लिए और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक करने के लिए. फॉर फाइनेंसिंग क्रेडिटर्स, म्हणजे आपण क्रेडिटर मीन्स दोज फ्रॉम हुम यू हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. आप लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा.
उसको पैसा पेड करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट कैश होनी चाहिए. फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, and some day-to-day operating expenses are there like repairs and maintenance, payment of electricity bill, payment of salaries, expenses of printing and stationery, expenses of insurance, etc. So all that, to meet all that expenses you need money, and that is also part of working capital. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असतात, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस असतात, आणि ते पेड करण्यासाठी आपल्याला पैशाची गरज लागते, आणि ह्या पैशालाच काय म्हटलं जातं, वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे आपण दोन कॅपिटल या ठिकाणी बघितले, एक बघितलं फिक्स कॅपिटल आणि आज आपण बघतोय वर्किंग कॅपिटल. सो फिक्स कॅपिटल इज द कॅपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू परचेस फिक्स असेट्स. म्हणजे फिक्स असेट परचेस करण्यासाठी आपण जे कॅपिटल वापरलं, जे फंड वापरलं, जे पैसा वापरला त्याला आपण म्हणणार फिक्स कॅपिटल. अँड कॅपिटल रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेन्सेस कॉल्ड ॲज अ वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे आपले जे डेली एक्सपेन्सेस असतात, रुटीन एक्सपेन्सेस असतात, ते पेड करण्यासाठी आपण जे पैसे वापरणार त्या पैशाला म्हटलं जाईल वर्किंग कॅपिटल. Here is some example of overheads. Overhead means indirect cost or expenses required to run a business. Overhead expenses include accounting fees, advertising, insurance, interest, legal fees, rent, repairs, taxes, telephone bills, travel expenditure, etc. So you also required working capital to make payment towards different overheads. Overhead means indirect expenses. So indirect expenses are like advertising expenses, accounting fees, insurance, printing and stationery, rents are some example of overheads. Next part is factors affecting working capital requirement. So here we have to see the factor on which the need of working capital is depends. First is nature of business. Firms engage in manufacturing essential products of daily consumption will need relatively less working capital, as there will be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. So if your firm manufacturing essential product, daily use product, then you required less amount of working capital because there is continuous inflow of cash into your firm. Why there is continuous inflow of cash into your firm? Because there is a continuous demand to your product, because you are manufacturing essential and day to day use product. म्हणजे इथे आपण बघू शकतो की तुमची जी कंपनी आहे ती मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल, आणि जर त्या कंपनीमध्ये इसेन्शियल प्रोडक्ट म्हणजे आवश्यक आपण जे डेली वापरतो, उदाहरणार्थ मीठ असेल, उदाहरणार्थ साबण असेल, उदाहरणार्थ बिस्किट असेल, जे प्रोडक्ट आपण डेली वापरतो अशा प्रकारचे प्रोडक्ट जर तुमची कंपनी तयार करत असेल तर तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल कमी लागणार आहे. व्हाय? Because there is continuous demand to such product in the market. या प्रोडक्टला कंटिन्युअसली डिमांड असणार आहे, सतत त्या प्रोडक्ट तुमचे डिमांडेड केले जाणार आहेत, म्हणजे तुमचे प्रोडक्ट सतत विकले जाणार आहेत आणि सतत तुमच्याकडे पैसा येत राहणार आहे. ओके, तो अगर आपका जो कंपनी है इसेंशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो आपके पास वो प्रोडक्ट बेचने के बाद कंटिन्यूअसली पैसे आते जाएंगे और उसके कारण आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है. Likewise, public utility concern which provides gas, electricity, transport, etc. have to maintain small working capital because of consumption, continuous flow of cash from their customers. Similarly, if you are providing public utility services like you are providing gas or electricity or transport service, then your product or your services will be demanded continuously.
तो आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपके जो भी सर्विसेज है वो कंटिन्यूअसली डिमांड में रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रहने ही वाला है, गैस डिमांड रहने ही वाला है, ट्रांसपोर्ट डिमांड रहने ही वाला है। तो आपको आपका जो भी सर्विस है उसका डिमांड कंटिन्यूअसली मार्केट में रहेगा, तो आपको पैसे भी कंटिन्यूअसली आते जाएंगे। तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल कब रखना पड़ता है कि आपके पास पैसा बाद में आने वाला है, कभी कभी आने वाला है, तो आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आएगा तब तक अगर कुछ खर्चा होता है तो खर्चा मीट करने के लिए, उस खर्चे के लिए पैसा पेड करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और इसमें अगर आप इसेंशियल प्रोडक्ट तैयार करते हैं या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देते हैं तो आपके पास कंटिन्यूअसली पैसे आते जाएगा, क्योंकि आपका जो भी गुड्स है या आपका जो भी सर्विसेज है उसका डिमांड क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस रहने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट्स, it requires huge amount of working capital, as sale of luxurious item are not frequent. It means if your organization, if your business concern is related with dealing in luxurious product or luxurious goods or services, then you require more amount of working capital, because there is limited demand or not frequent demand टू युअर गुड्स और सर्व्हिसेस इन द मार्केट. म्हणजे जर तुम्ही लक्झरियस गुड्स किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असतील तर तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल काय लागणार आहे, जास्त लागणार आहे. काय जास्त लागणार आहे? कारण की तुमचे जे गुड्स आहेत किंवा सर्व्हिसेस आहेत ते लक्झरियस आहेत, आणि जे लक्झरियस गुड्स आणि सर्व्हिसेस असतात त्याचा डिमांड फ्रिक्वेंट असतो का, कंटिन्युअस असतो का, तर नाही. त्यांचा डिमांड कंटिन्युअस नसतो, म्हणजे कंटिन्युअस तुमचे प्रोडक्ट विकले जाणार नाही, म्हणजे कंटिन्युअसली तुमच्याकडे पैसा येणार नाही. सो इफ युअर गुड्स और सर्व्हिसेस आर इसेन्शियल, then you required less amount of working capital, and if your goods or services are luxurious, then you required more amount of working capital. Trading or mercantile firms which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers' demand and have to extend credit facilities to attract customers. Hence, they need large amount of working capital. So here what is given? Trading concern or trading firm required more amount of working capital because they need to maintain a huge stock of material, and also they need to provide credit to their customer, and therefore they required large amount of working capital. But remember, trading concern required small amount of fixed capital, but they required large amount of working capital. तो अगर आपका कंपनी या आपका फर्म ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगने वाला है, ज्यादा लगेगा. क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि आपका ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब क्या करने वाले हैं, आप एक से गुड्स परचेज करेंगे और दूसरों को सेल करेंगे. आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, मतलब आप एक से परचेस करेंगे तो आप दूसरों को सेल करने वाले हैं, तो आपको जो गुड्स का स्टॉक है वो ज्यादा करके रखना पड़ता है. और ऐसे केस में आपको कस्टमर को क्रेडिट भी देना है, उधार भी देना है. तो इन सब चीजों के कारण आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, ज्यादा. जैसे दुकानदार रहता है, दुकानदार क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, नहीं, वो ट्रेडिंग करता है. तो उसको वर्किंग कैपिटल क्या लगता है, ज्यादा, लेकिन उसको फिक्स कैपिटल क्या लगता है, कम लगता है. सेकंड इज साइज ऑफ बिजनेस. द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. A firm with large scale operation will require more working capital and vice versa. It means if your firm producing large amount of goods or services, then you require large amount of working capital. And if your firm working on small scale basis, then you required small amount of working capital. म्हणजे आपली जी फर्म आहे त्या फर्मची साईज किती आहे,
बिझनेस किती आहे त्याच्यावर वर्किंग कॅपिटलची रिक्वायरमेंट डिपेंड असते. जर आपला बिझनेस मोठा असेल, आपण प्रोडक्शन मोठ्या प्रमाणात करत असतील, तर आपल्याला वर्किंग कॅपिटल जास्त लागणार आहे. आणि जर आपण प्रोडक्शन कमी प्रमाणात करत असतील तर आपल्याला वर्किंग कॅपिटल कमी प्रमाणात लागणार आहे. म्हणजे इथे आपण लक्षात ठेवू शकतो, लार्जर द साइज ऑफ फर्म, larger the amount of working capital required. Smaller the size of firm, you required smaller amount of working capital. Next is volume of sales. Volume means quantity. This is the most important factor affecting size of working capital. The volume of sale and size of working capital are directly related with each other. If volume of sale increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. Remember, here sales is considered as a credit sales, not a cash sales. Because if you are selling goods on cash basis, there is a less need of working capital. Here we have considered that sales is on credit basis. So what is given? The working capital and the sales, that is credit sales, are directly related with each other. It means if your credit sales increases, then need of working capital also increases. And if your credit sale decreases, the need of working capital also decreases. मतलब अगर आप उधार पे ज्यादा गुड्स बेचते हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा बाद में आने वाला है. लेकिन वो पैसा अगर 2 महीने के बाद आएगा, लेकिन क्या 2 महीने तक बाकी का खर्चा नहीं रहेगा? रहने वाला है. एम्प्लॉय को आपको पैसा देना पड़ेगा, लाइट का बिल भरना पड़ेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा. तो वो पैसा देने के लिए वो पैसा आपको खर्चा करना है. वो खर्चा करने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा, और उसी को कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल. तो अगर आप क्रेडिट पे ज्यादा गुड्स बेचते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या पड़ने वाली है? ज्यादा पड़ने वाली है. और अगर आप कैश पे गुड्स ज्यादा बेचते हैं तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, तुरंत ही आ रहा है. जैसे आप बेचते हो पैसा आ रहा है, ऐसे समय में वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको कम पड़ेगी. फोर्थ इज प्रोडक्शन साइकिल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन साइकिल. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन साइकिल. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it requires less working capital. So, if your production process is longer or your production process take longer time to convert raw material into finished goods, then you required large amount of working capital. And if your production cycle is short, it means your production process taking less time to convert raw material into finished goods, then you required small amount of working capital. म्हणजे आपली जी प्रोडक्शन प्रोसेस आहे, प्रोडक्शन सायकल आहे, ती समजा लॉंग असेल, म्हणजे आज आपण समजा रॉ मटेरियल परचेस केलं आणि ते परचेस केल्यानंतर ते आपण फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट करायला जर जास्त वेळ लागत असेल, म्हणजे 1 वीक लागत असेल, 1 मंथ लागत असेल, म्हणजे लॉंगर टाइम जर लागत असेल, तर आपल्याला वर्किंग कॅपिटल काय लागणार आहे? जास्त. व्हाय वी नीड वर्किंग कॅपिटल मोर? बिकॉज टिल वी आर कन्वर्टिंग दॅट प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड्स, वी नीड टू मॅनेज अदर डिफरंट एक्सपेन्सेस. म्हणजे आपण आता रॉ मटेरियल आज परचेस केलं, आपण ते कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला वेळ लागणार आहे, समजा 1 मंथ लागणार आहे. मग 1 मंथ पर्यंत ते फिनिश गुड्स मध्ये कन्वर्ट होणार आणि त्यानंतर आपण ते सेल करणार, नंतर आपल्याकडे पैसे येणार. म्हणजे ते सेल करण्यासाठी आणि त्याचे पैसे मिळण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? वेळ लागणार आहे.
मग तोपर्यंत दुसरे एक्सपेन्सेस असणारच आहेत. मग ते पेड करण्यासाठी काय लागणार आहेत, आपल्याला पैसे लागणार आहेत. दॅट इज वर्किंग कॅपिटल. सो व्हेन प्रोडक्शन सायकल इज longer, then you required large amount of working capital, and if production cycle is shorter, then you required small amount of working capital. तो प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर आपका वर्किंग कैपिटल की नीड डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल. व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, sales will increase. Boom means favorable condition, good conditions, economic condition called as a boom. This will lead to increase in investment in stock. This require additional capital. So if there is a boom in economy, it means there is a good economic condition. When there is a good economic condition, people demand more goods and services. The demand from people increases, and when demand from people increases, you need to increase your production capacity. And as you need to increase your production, you require to purchase more raw material, and therefore you need more working capital. So in boom period you required more working capital. म्हणजे जेव्हा बूम पिरियड असतो तेव्हा काय असतं, लोकांकडे भरपूर पैसा असतो, आणि पैसा असतो म्हणून लोक काय करतात, लोक मोठ्या प्रमाणात वस्तू किंवा सर्व्हिसेस डिमांड करतात. मग त्यांचा डिमांड वाढणार म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला प्रोडक्शन वाढवावं लागतं. मग प्रोडक्शन वाढवायचं म्हणजे आपल्याला जास्त रॉ मटेरियल परचेस करावं लागणार आहे. आपल्याला फिनिश गुडचा मोठ्या प्रमाणात स्टॉक करून ठेवावा लागणार आहे, आणि म्हणून आपल्याला वर्किंग कॅपिटल जास्त लागणार आहे. ड्युरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन, अँड हेन्स द नीड ऑफ वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो डिक्लाइन. रिसेशन इज द कंडिशन वेअर the demand for goods or services declines. म्हणजे रिसेशन ही एक अशी कंडिशन असते, त्या कंडीशनला डिमांड क्या होतो, कमी होतो. तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाता है, सभी चीजों का कम होता है. लोगों के पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं इसीलिए डिमांड नहीं. अगर डिमांड ही नहीं तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्या, नहीं, हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम. मतलब हमें कम रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, बाकी के सारे खर्चे हमारे कम हो जाएंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पे याद रखना है, अगर बूम पीरियड है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि बूम पीरियड में डिमांड ज्यादा होता है. डिमांड ज्यादा तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, बाकी के सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा. अगर रिसेशन है तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डिमांड कम तो हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कम परचेस करना पड़ेगा, बाकी के सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. 6th, terms of purchases and sales. If the firm does not get credit facility for purchases but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. So here what is given? If your supplier is not ready to give credit facility for purchases of material, it means you need to pay money immediately as soon as you purchase material from your supplier. But at the same time, you are giving or you are adopting liberal credit sales policy for your business. It means you are selling more goods on credit basis. At that time, you required more working capital. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप गुड्स परचेस करने जाते हैं, मटेरियल परचेस करने जाते हैं, तब सप्लायर आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता, मतलब उधार नहीं दे रहा है, या उधारी का जो समय है बहुत ही कम दे रहा है. तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी कम मिल रहा है, मतलब आज आप लोगों ने परचेस किया, आपको तुरंत ही उसका पैसा देना पड़ता है. लेकिन आपका सेलिंग का पॉलिसी कैसे है, लिबरल है.
मतलब आप गुड्स जो सेल करते हैं वो क्रेडिट पे सेल करते हैं और उसका पॉलिसी आप लोगों ने लिबरल रखा है। मतलब आप आज अगर आप गुड्स बेचते हैं तो आप कहते हैं 1 महीने के बाद पैसा देना, 2 महीने के बाद पैसा देना। मतलब आज अगर गुड्स बेचोगे तो 1 या 2 महीने के बाद आपके पास पैसा आएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। ऑन द अदर हैंड, इफ credit term of business purchases are favorable and terms of credit sales are less liberal, then requirement of cash will be less. Thus, working capital requirement will be reduced. So, on the other hand, if your terms of purchases are favorable, it means your supplier giving you credit when you purchase material from that supplier, but you are not giving credit to your customer while selling the goods. At that time you required less amount of working capital because your seller providing you or your supplier providing you credit for purchase of material. It means you need not require to pay money immediately, but at the same time you are selling more goods on cash, so you are getting cash from customer immediately, so you required less amount of working capital. म्हणजे इथे काय होतंय, आधी काय आपण बघितलं की जर परचेस तुम्हाला जेव्हा तुम्ही परचेस करता आणि ते परचेस करत असताना जर तुम्हाला क्रेडिट फॅसिलिटी मिळत नसेल आणि जे तुम्ही सेल्स करत असताना तुम्ही जास्त जर क्रेडिटवर सेल करत असतील तर तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल काय लागतं, जास्त. आणि आता इथे काय सांगितलेलं आहे, परचेस करताना जर तुम्हाला कंडिशन फेवरेबल असतील म्हणजे सेलर तुम्हाला काय करतो किंवा सप्लायर काय करतो, जेव्हा तुम्ही गुड्स परचेस करता तेव्हा तुम्हाला पटकन पैसे द्यावे लागतात का, पटकन पैसे द्यावे लागत नाहीत, कारण की त्याच्या टर्म्स कशा आहेत, तुमच्यासाठी फेवरेबल आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला त्यांनी क्रेडिट फॅसिलिटी दिलेली आहे. तो सांगतो की आज तुम्ही गुड्स घ्या आमच्याकडनं आणि नंतर पैसे द्या. आणि त्याच वेळी तुम्ही काय केलेलं आहे, तुम्ही क्रेडिट सेलसाठी लिबरल पॉलिसी ठेवलेली आहे का, नाही. या ठिकाणी तुम्ही क्रेडिट सेलसाठी तुमची पॉलिसी लिबरल नाही. म्हणजे आज जर तुम्ही गुड्स विकला तर लगेच तुम्ही त्याच्याकडनं पैसे घेता, कस्टमरकडनं लगेच पैसे घेता. जर अशी कंडिशन असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कॅपिटल काय लागणार आहे, कमी लागणार आहे. सो युअर नीड ऑफ वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ परचेसेस अँड सेल्स. 7th, growth and expansion. The working capital requirement of a firm will increase with growth of a firm. A growing company needs fund continuously to support large scale operation. See here what is given. If your firm is growing, if your firm is expanding, then you require more working capital, because with growth and expansion of firm the number of activities in your firm get increases, and when number of activities increases you need more fund to meet different expenses. तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, जैसे जैसे आपकी फर्म ग्रो होती है, बढ़ जाती है, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं. और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ते जाएंगे आपको पैसे की जरूरत भी क्या होने वाली है, ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होने वाला है, ज्यादा लगने वाला है. तो यहाँ पे इकडे तुम्ही लक्षात ठेवा की जेव्हा तुमची फर्म ग्रो होणे म्हणजे काय, वाढणे, एक्सपांड होणे. जेव्हा तुमची फर्म ग्रो होते, एक्सपांड होते, तुमच्या फर्म मधल्या सर्व ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, ऑपरेशन्स आहेत, ते वाढत जातात. आणि जेव्हा तुमच्या ऍक्टिव्हिटी वाढत जातात तुमचे खर्च वाढतात. आणि जर खर्च वाढणार असतील याचाच अर्थ तुम्हाला वर्किंग कॅपिटलची गरज पण काय लागणार आहे, जास्त लागणार आहे. 8th is credit control. Credit control includes the factor such as volume of credit sales. Volume means quantity of credit sales. The terms of credit sale. Terms of credit sales may be liberal or may be conservative.
the collection policy, that is effectiveness of collection policy, how effectively you collect money from your debtors. If credit control policy is sound means effective, it is possible for the company to improve its cash flow. It means if your credit control policy is effective, then it is possible to collect money immediately from debtor, and it leads to, or it results in continuous cash flow into the firm. If credit policy is liberal, it creates a problem for collection of funds. But if you are using or you are adopting liberal credit policy, then that will create problem for collection of money, and it leads to increase in need of working capital. It can increase possibility of bad debt. So if you are adopting liberal credit policy, then that may lead to increase in bad debt. Bad debt means money irrecoverable from debtor is called as a bad debt, and that is loss for the business. Therefore, a firm requires more working capital. The firm making cash sales require less working capital. So, your credit control policy or credit control must be effective. If your credit control is more effective, you require less amount of working capital, because effective credit control results in continuous cash flow. And if your credit control is not effective, that much effective, then you required more working capital, because liberal credit policy leads to increase in bad debt. मतलब यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है, ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, वो इफेक्टिव होना चाहिए. अगर वो इफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप गुड्स क्रेडिट पे बेच रहे हो, लेकिन आप तुरंत पैसा भी कलेक्ट करते हो. जो समय दिया है उस समय पे आप पैसा भी कलेक्ट कर रहे हो. और आपका जो प्रोपोर्शन है, क्रेडिट पे कितना बेचना है, कैश पे कितना बेचना है, वो भी अगर अच्छा है, अगर ये सभी चीजें अच्छे से होती है, मतलब इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, तो आपके पास पैसे कंटिन्यूअसली आते जाएंगे, आपका बैड डेट कम होगा, और ऐसे समय में आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी. लेकिन अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, मतलब आज आप गुड्स बेचते हैं और बोलते हैं दे देना पैसा कभी भी, आज देना, कल देना, एक महीने के बाद दे देना, और आप पैसा मांगने के लिए जाते भी नहीं, उसको याद भी नहीं दिलाते, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, क्या हो जाएगा, वो बिजनेस कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद बंद पड़ने वाला है. तो इस तरह का अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रहेगा तो बैड डेट के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ज्यादा होते हैं, और ऐसा बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. तो आपका क्रेडिट कंट्रोल किस तरह से है, अगर वो इफेक्टिव है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, अगर वो इनइफेक्टिव है या ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा. 9th is management ability. The requirement of working capital is reduced if there is proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory calls for higher level for working capital. So if there is a proper or effective coordination between production department and distribution department, or you can say sales department, then there is a less need of working capital, because as soon as you produce goods, that goods get sold by the sales department. So you require less amount of working capital, but it will happen only if there is a good and effective coordination between production and sales department, or you can say distribution department. And a firm stocking on heavy inventory calls for higher level for working capital, and if there is no proper coordination between production department and distribution department, or you can say sales department, then that will lead to higher stock of goods.
and when you make higher stock of goods you require more working capital, because you are just going to produce goods and making stock, and you are not selling that goods. So that will lead to, or that will result in increase in need of working capital. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन दो डिपार्टमेंट के बीच में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हमारा जो गुड्स है जैसे ही तैयार होता है अगर वो बेचा जाएगा मतलब हमें तुरंत ही पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर वो दो डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो। लेकिन अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते जाएगा, स्टॉक बनाते जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण वो सेल्स नहीं करेंगे, और अगर सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा? आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको वर्किंग कॅपिटल ज्यादा लगने वाला आहे। ओके, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे दोन्ही डिपार्टमेंट मध्ये चांगल्या प्रकारचं कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आणि सेल्स डिपार्टमेंट जर त्यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं कोऑर्डिनेशन असेल, इफेक्टिव्ह कोऑर्डिनेशन असेल तर आपल्याला वर्किंग कॅपिटल कमी लागणार आहे, आणि जर त्यांच्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं कोऑर्डिनेशन नसेल तर आपला फिनिश गुडचा जो स्टॉक आहे तो वाढत जाणार आहे, आणि जेवढा तुमचा स्टॉक वाढत जाणार आहे तेवढा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल पण काय होणार आहे? वाढत जाणार आहे। 10th is, that is last point, external factors. If financial institution and banks provide fund to the firm as and when required, the need for working capital is reduced. If there is a good relation with financial institution and banks or financial institution are ready to provide fund to your business as and when you require, then you require less amount of working capital. म्हणजे जर बँक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन यांच्याबरोबर तुमचे रिलेशन चांगले असतील आणि तुम्हाला पाहिजे तेव्हा बँक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन फंड म्हणजे कर्ज द्यायला तयार असतील, लोन द्यायला तयार असतील, तर तुम्हाला तुमच्या खात्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल जास्त ठेवण्याची गरज पडणार नाही, कारण की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला गरज असेल तेव्हा तुम्हाला बँक किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन पैसा देण्यासाठी तयार असणार आहे। मग अशा वेळी आपल्याला वर्किंग कॅपिटल आपल्याकडे जास्त ठेवण्याची गरज पडत नाही।